Hi everyone, this is another video in legal terminology, and that is Maxim in Legal Profession Part 4. So let's get started. Today's first maxim is malum in se or mala in se. It means wrong or evil in itself. मतलब गलत या घिनौना. Mala in se is a term that signifies crime that is considered wrong in and of itself. For example, most human beings believe that murder, rape, and theft are wrong, regardless of whether a law governs such conduct or where the conduct occurs and is thus recognizably malum in se. Generally लोग जो human beings हैं वो murder, rape और theft को गलत समझते हैं, regardless of whether a law governs such conduct. मतलब ये ना जानते हुए भी कि लॉ उस चीज को गवर्न करता है या नहीं करता है, बट उसे घिनौना समझा जाता है. That is the meaning of malum in se. Our next maxim is quid facit per alium facit per se. It means he who does a thing by another does it himself. इसका मतलब ये होता है कि A ने अगर B को कहा है कि तुम्हें ये काम करना है और B से कोई गड़बड़ी हो गई है तो लायबिलिटी किसकी होगी? A की होगी, क्योंकि A ने बोला था उसको वो काम करने के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं. He who does a thing by the instrumentality of another is consideration as if he had acted in his own person. मतलब अगर बी से कोई काम बिगड़ गया है तो वो किस जिम्मेदारी होगी? ए की, क्योंकि ए ने बोला था, ए ने उसे जैसे गाइड किया था बी ने वैसे ही किया. तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये आ रहा है वाइकेरियस लाइबिलिटी से, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ टॉट. टॉट मीन्स सिविल wrong. So quid facit per alium facit per se. It means he who does a thing by another does it himself. Our next maxim is Furiosi nulla voluntas est. It means mentally impaired or mentally incapable persons cannot validly sign a will, contract, or form the frame of mind necessary to commit a crime, or a person with mental illness has no free will. तो जो इंसान अनसाउंड माइंड का है या मेंटली इनकेपेबल है वो पर्सन एक विल साइन नहीं कर सकता, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, और ना ही वो ये ऐसे फ्रेम कर सकता है कि वो किसी के साथ कमिट करे क्राइम. और अ पर्सन विद मेंटल इलनेस हैज नो फ्री विल. नेक्स्ट इज mandamus. It is a kind of writ that comes in Article 32. It means we command. A writ of command issued by a higher court to government or public authority to compel the performance of a public duty. Next is just solely. It means right of soil. One of the most important maxim in tort is res ipsa loquitur. It says the thing speaks for itself. यहाँ thing से मतलब है accident. आगे समझते हैं ये क्या कहता है. The rule that in an action of negligence, the plaintiff must affirmatively prove negligence. मतलब plaintiff को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, बट ये उसे पता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है. It may cause hardship in cases where the plaintiff can prove the accident. मतलब ये plaintiff बोल सकता है कि हाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, बट he doesn't have to prove the condition कि वहाँ पे कैसे क्या हुआ है, but can't show how it happened. I have explained it earlier कि कैसे हुआ ये उसे नहीं बताना पड़ता है. The fact being slowly outside his knowledge, क्योंकि facts तो उसे पता ही नहीं है. In such cases, it is sufficient for the plaintiff to prove the accident कि हाँ ये accident हुआ है and nothing more. उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं बताना पड़ता है. There is a presumption of negligence according to the maxim res ipsa loquitur. और ये presumption पे believe करता है कि negligence पे काम हो गया है यहाँ पे. मीन्स इस प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, एंड कोर्ट भी अज्यूम कर लेती है कि एक्सीडेंट देखे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा. So guys, this was in part 4 of legal terminology that we have covered, and there are more maxims that are going to come. So please like, share and subscribe my YouTube channel and stay tuned with Legacy of Law. Thank you.